Share my screen. So I got a new notepad. That is fine. My screen is visible. So this will be the notepad. So whatever we did, password, right? The password authorization type or password grant type we implemented. Okay. Any question? Anything? Hmm? Or clear? Clear? Okay. तो ये आपने मतलब ये सब ने किया क्या ये जो कोड है इधर? Okay. Let me go through one more time, right, to set the context. बीच में मतलब okay. Let's see what we did, right. So what do you mean by refresh grant? तो पहले कैसा था? पहले you know we understood that the whole flow of the Spring Security, right? That how this authentication is object, right, in the filter, from the whatever credential you are using, username, password, you are creating authentication object, then you are passing that authentication object to authentication manager. Then authentication manager will use the authentication provider. There might be multiple authentication provider, right? Out of that, with which the authentication is getting matched, right, it will choose from that authentication provider. Then it will use the authentication provider actually use the user detail service and password encoder. Then whenever everything is good, it will mark that authentication object as is authenticated. Then it will put that object in the security context. So any then it will go to the any controller or my actual resource which is sitting behind the Spring Security, right. This is the first floor of the Spring Security is happening, right. Now when we are coming to the OAuth 2.0, what we are looking that, okay, based on that, right. So we have different type of things. So here we introduce the four different entity. One is like the resource, right, and or resource owner, right. Resource owner is that user who is going to use or assume. For the example I gave, like you have a account details and there is some banking software, and this account details is being stored in some database layer. Right now you, as a user, you want to get the your user details. So what you will do, you will first interact with a client. Client means there might be some UI application who is to whom you are giving your username password, so that that client will first reach to the authorization server, right. And based on that, whenever authorization server has a valid client and it has a valid username password, it issued a token, right. Simple token, no JWT, nothing, simple token, right. Unique identifier token, right. And after that, what this client does after getting the token,
what it does, it will use that token to call the resource server. And what resource server will done, resource server will do, actually it will validate the token if it is valid or not. If it is valid, it will give you the all the details. Okay, so if I go with this slide, so if I go with this slide, right? So this is my thing. I want to access my account. Here is my credential. Client want to reach to auth server. Okay, and the credential are correct. Here is your token to access our account. I need user account. Here is the token from authorization server. Perfect. Here is your user account. Research server is telling, right? This is the whole flow. Now what we first took, we took the implementation of auth server. Okay, and auth server, what we are trying to do, we are trying to do that. Okay, so first of all, we will try to implement something. User want to access a token. Here is a credential. I will call from client. But as of now, I'm not using any application. Client is my assume that Postman, right? So auth server, I implemented auth server. Then what I did, I just use that token endpoint, and I saw that if this token is getting written back or not, right? Then again, resource server basically there are, how the resource server will know about the token, because it is not the owner of the token, right? So eventually it will again call that auth server to validate, or should be some mechanism to validate something, right? But initially we thought that, okay, so let's implement another, use not implement, actually use or implement, you can say, another endpoint, which is a check token. Okay, first of all issue the token, then do the check token. And what are the information, right, sitting in behind and token is expired or not, this information is being written from the check token API. Okay, so this is a whole flow, and this is the code. So to do that, what we did, we first took the Spring Security, we implemented, we add this annotation, enable authorization server. Then web security config. In the web security config, what we did the configure method. We did the CSRF disable. This is for the to allow the post method. And second is like we configure one user with the Ratul and 12345 authorities are read. Then we implemented no password encoder. Then we need to create a bin, right, with all this configuration, which will be used by the auth server, that is authentication manager. Okay, now what is that auth server config we are doing here? Here auth server config, we are implementing authorization server configure adapter, right? Here we need to configure the clients. So I'm using the in-memory client.in-memory. This is my client app1. This is my secret one. This is the authorized grant type. These are the scope, right? And this is the access validity token, right? Access token validity second. Okay, and in the endpoint, I'm providing that authentication manager, right? And finally what we did, that as a resource server, if someone is using the check token, right, I also implemented that it should be also authenticated, right? So I can't, in the Spring Security world, no one will get the free pass, right? So that's what I configured this check access token. It should be is authenticated, and the authentication details will be resource and secret. Okay, till this point we have implemented, and after that we tried to do few things, like let me take a look. So we tried to get some token, right? These are the token. So
ठीक है. Now if I run this code, it will give me a token. Oh, sorry, it is that invalid client unauthorized grant type. Oh, hmm. So I was getting the access token, right? Token type is the bearer thing, expire in 299 because we gave the 300 second, so 1 second gone, right? And if I now call the check token, right? So it will give me the next response will be in authorization. I need to use the resource and secret, and it should be body should be token, right? Okay, and it is giving me all the details like it is active or not, for what time it will be expired, what is the username, what is the authorities, client id and scope. Okay, क्लियर है? इधर तक हमने इम्प्लीमेंट किया था प्रॉपरली, राइट? यस और नो? Okay, now let's do the refresh token. Okay, let's add the refresh token. What is that? Okay, listen this word carefully, you might get the confused sometime. What is the need of the refresh token? Okay, so the need of or necessary of the refresh token, I'll give you one classic example. Suppose you are using one app, right? uh, what it has to do, it has to schedule something, or it has to process something, not the real time, right? So assume that it has a process at 3 o'clock, or I assume that after 15 minutes, right, after your token has been expired, but it don't want to disturb you, right? So what it will do, it will ask you to do the login, and it will keep the refresh token, right, and the access token also. So whatever current processing it needs to do, you can use the current processing, but it will store the refresh token, right? Assume that during the token issuance it will get another token, not only that access token, but there it will get another token, that is a refresh token, and it will store the refresh token in some database layer. And after some time, it it won't have the username password, because you as a user it not going to log in again, but the application want to access the resource server. Okay, so what system does, right? So there is a provision that yes, you can do this. What you need to do, you need to use that refresh token, right? And you need to call my OAuth token itself, and I'll give you one more token which is a current issued and which is be active from current time. Okay, and you can use that token. Okay, that means whenever you are going to call the refresh token, that type, you as a client, you won't have the username password details. Instead of, you will have a token, refresh token, which has been already issued sometime earlier, sometime back. Okay, ठीक है? Understood? Yes, no, need more clarification? Yes. Wait a minute. बराबर. So let's understand what is the password. Whenever your password, your
is you are using the password authorize, whatever you are giving the client details, right? Client credential you are giving, yes, app1 sec1. Then you are giving the scope of the application of the client ka scope. Then you are giving the grant type. Then you are giving the user credential. Okay. Now what will happen in refresh token? This refresh token you will get, so after configuring this, whatever you are getting access token, right? And you are getting access type token type. Your access type is like bearer. Then you are giving the expiry time, then one or two more field, right? But what I'm saying you, okay, I'll give you one more token, that is the refresh token. Okay, and what I'll say that suppose after some time, means when user is not available, you want to access the resource server, right? What you can do, use this refresh token instead of this user credential, right? And I'll give you a new token. Clear? ठीक है, समरस clear? User, yes, yes. लेट्स सी, एक बार प्रैक्टिकल करते हैं फिर समझ में आएगा क्या क्या करना है. सो बेसिकली, सो रिफ्रेश टोकन ऑलवेज गो विथ पासवर्ड टोकन, राइट? और एनी अदर कॉम्बिनेशन, बट लेट्स पासवर्ड टोकन के साथ ही चलते हैं. सो व्हाट यू नीड टू राइट हियर, राइट? व्हाट द चेंज यू नीड टू डू फॉर द रिफ्रेश टोकन. एंड पहले मैं दिखा देता हूँ एक बार. जब हम OAuth टोकन यूज करते हैं, मतलब वट एवर OAuth टोकन वी आर कॉलिंग, राइट? वी डोंट हैव, ओके, बॉडी नहीं है, ओके. यहाँ पे देख लो क्या क्या एक्सेस टोकन है, टोकन एक्सपायरी है, टोकन टाइप है, एक्सपायरी एंड स्कोप है, राइट? दिस आर द फोर इन्फॉर्मेशन. देयर इज नथिंग. कोई रिफ्रेश टोकन है यहाँ पे नहीं है, राइट? नो नो टोकन, राइट? अभी हमको हमको रिफ्रेश टोकन जब ऐड कर देंगे तब यहाँ पे और एक टोकन आएगा, दैट विल बी द रिफ्रेश टोकन. ओके, सो लेट मी फर्स्ट इम्प्लीमेंट दिस, देन इट विल बी वेरी क्लियर, राइट, टू यू. तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, जस्ट फॉलो इट एंड यू कैन कोड विथ मी. यू नीड टू ऐड one more authorization grant type in the authorization grant types method, that is refresh token. Okay, and for refresh token it actually it will not means it explicitly use the user detail service. Okay, so I'll show you what will happen. So refresh token, okay, then what you need to do for the refresh token, you need the user detail service, because refresh token is being issued, right? What should I say, means whenever you are using the refresh token, you are actually combining something, user type of thing, and you are generating that refresh token, right? So it is not that the session wise thing, but it will instead of the user details, you are actually issuing a refresh token. So that's what, whenever refresh token is being implemented, Spring Security or the auth security configure need the user detail service. Okay, I'll just follow with me, I'll explain you again, right, why this is needed. So what I need to do, just take a look what I'm doing here. Similar to the authentication manager, I am using one user detail service, bean, right? So what this Spring Security will do, this web security configure will do, based on the configuration, it will create two bean. One is authentication manager we already used, and another is user detail service. Okay, and in the auth server config, right, whatever we are going to do, we are going to use that
user detail service, AutoWare. And in this so in in web security configure, I added this line. You can code with me. Right, and here I added AutoWare, and this authorization grant type you can add it. And the last one is in the configure, I use that user detail service. Okay. Whenever you were done, let me know. You can start your server. Let me know whenever done. Okay. Okay.
Done, Ratul, Samresh? Okay. Samresh? So let's see what is getting changes in the response type of response, right, of this auth token. If you can see, one field added, refresh token. Can you see? And let me take a look that how we can use this refresh token, okay, to get another access token. Some rest. Look at here what we are doing. Okay, so it will make you clear that what I was saying. What is the meaning of it? Okay. Now, what I'll do, I'll go the access token, check token, right, and authorization resource. Okay, that is fine. I'm doing a check token. No, sorry. Check token node, or you know, I need to get another token, right, using the refresh token. Check token is the secondary thing. We will, go into next thing. Now, whatever I'm doing using the basic auth, I know that I have the app on sec one password client details. I have, yes, I am a client application. I have the things, but what I don't have the username password, right? यूजर ने लॉगिन करके छोड़ के चला गया आई डोंट हैव द यूजर नेट पासवर्ड currently, but I have the refresh token I stored, right? Right, and I'll use that refresh token, and in the grant type instead of password I'll write that this is the refresh token. ठीक है, and let's see if the auth server is giving me a new fresh token or not. If I call this and it is giving me a new token and along with one refresh token. If I use this refresh token, I'll again get a new access token. Exactly. Exactly. नहीं चेंज होगा ना, एवरी टाइम न्यू टोकन विल बी जनरेटेड. अभी इसका एक क्लासिक एग्जांपल और एक दूं मैं. आप एक लॉगिन सर्विस बना रहे हो, मतलब जो भी है लॉगिन, आप ये नहीं चाहते हो कि यूज़र मतलब लॉग आउट होके चले गए आफ्टर सम टाइम. सो व्हेन एवर इट इज़ गेटिंग यूज्ड, राइट, you should use it. That means what I'm trying to say, each and every click, मैं एक यूज़र हूँ, मैं एक एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा 15 मिनट है, राइट. सो हाउ विल मेक श्योर कि मैं अगर 3 घंटा एप्लीकेशन की यूज़ करूँ, 15 मिनट के बाद मेरा लॉग आउट ना हो जाए. आप क्या कैसे मेक श्योर करोगे? एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. करेक्ट. लॉगिन किया आपने, आपके पास मेरा पास यूज़र नेम पासवर्ड है, ठीक है. मैं रिफ्रेश टोकन यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, एवरी टाइम व्हेन इट क्लिक्स, राइट, आई इशू ए न्यू रिफ्रेश टोकन टू यू टू यूज़ इन द नेक्स्ट टाइम, राइट. आप पहले तो आप चेक टोकन से देखो, अगर चल गया तो ठीक है, अगर नहीं चला तो यूज़ द रिफ्रेश टोकन एंड गेट ए न्यू टोकन एंड यूज इट. समझ रहे हो? जब भी कुछ क्लिक करोगे, राइट, सो सपोज यू यूजर एज ए क्लाइंट, चेक टोकन आपको आपको एक्सपायर दिखा है, तो आप क्या करोगे? आप यूजर को ये नहीं बोल सकते हो कि अगेन लॉग इन करो, तुम्हारा हो गया. तो तुम बैकएंड में क्या करोगे, एक रिफ्रेश टोकन मारोगे, यू विल गेट अनदर टोकन, देन यू विल टेक ए लुक. आई थिंक
टॉम टॉम में जो होता है क्या बोलते हैं, टॉम से जब बैकएंड को कॉल करता है, जो हमारा पुणे मेट्रो में जो इम्प्लीमेंट किया था उसमें ये इम्प्लीमेंटेड है कि आपका रिफ्रेश टोकन यूज़ होता है, राइट? सो एवरी टाइम इट एक्सपायर, सो इट विल फर्स्ट चेक टोकन में उसको कुछ इशू आएगा, देन इट विल इशू ए न्यू रिफ्रेश टोकन, right? Then it will use that token to log in. Hmm? Probably. Yes, probably. Hmm. Exactly. तो दिस इज द यूजर इम्प्लीमेंट, तुम कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, बट ऑथ सर्वर का काम है कि आपको मैं ऑथ सर्वर का काम है दो चीज, कि पहली बार टोकन क्रिएट करना और टोकन को वैलिडेट करना। तो ऑथ सर्वर विल ऑलवेज एक्सपोज टू एंड पॉइंट, वन इज राइट ओथ टोकन एंड ओथ चेक टोकन, ठीक है? आप जो बोल रहे हो वो है कि वो इम्प्लीमेंटेशन है कि आप पहले यूज़र लॉगिन किया तो आप पहले देखो, फिर मैं दूसरा एक रिसोर्स, अभी रिसोर्स सर्वर का हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, रिसोर्स सर्वर इम्प्लीमेंट करेंगे तो और चीज़ क्लियर होगा कि हाउ वी आर रिसोर्स सर्वर विल इंटरेक्ट विद द ऑथ सर्वर। यस, बट इवेंचुअली व्हाट यू आर जस्ट सेइंग कि मैं पहले ऑथराइजर करूँगा, मेरे पास टोकन है तो मैं रिसोर्स सर्वर से चेक टोकन करके देखूंगा कि सही है कि नहीं, अगर नहीं है तो मैं एक नया रिफ्रेश टोकन बनाऊंगा यूजिंग दैट रिफ्रेश। एग्जैक्टली, हर एक के साथ एक रिफ्रेश टोकन एंड चलता रहेगा। एक्सेस टोकन से कैसे काम चलता बताओ? यूजर नेम पासवर्ड आप स्टोर करके रखोगे सेशन में। यूजर नेम पासवर्ड आप स्टोर करके रखोगे सेशन में एवरी टाइम, सो एक्सेस रिफ्रेश टोकन का पर्पस ये है कि व्हेन यू डोंट हैव द यूजर नेम पासवर्ड, देन व्हाट यू विल डू। आप क्लाइंट साइड में बोल रहे हो कि यूजर नेम पासवर्ड मैं कैश करके रख दूंगा, वेरी बैड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है? कभी भी इसको क्लाइंट साइड में कोई जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन में यूजर नेम पासवर्ड आप सेव करके मत रखो, डोंट, नेवर। फिर तो पूरा पूरा सिस्टम कंप्रोमाइज हो गया ना। ये है कि जिस टाइम पे यूजर इज गिविंग द थिंग्स, यूजर, मैं मतलब आई एम ए रिसोर्स ओनर, आई एम गिविंग यू, आई विल जस्ट यूज दैट टू गेट द टोकन, बट आई विल नॉट see and I will not intercept whatever you are giving and I will not store it, राइट? फिर अगर ऐसा इम्प्लीमेंटेशन है तो आपका कोई भी पेमेंट सिस्टम में जाओगे, पीसीआईडी से सर्टिफिकेट रोक देगा कि ये क्या कर रहे हो तुम, क्लाइंट साइड में तुम यूजर नेम पासवर्ड को परसिस्ट करके रख रहे हो गया, खत्म। बट आपके पास अगर रिफ्रेश टोकन है, देयर इज नो हरी, रिफ्रेश टोकन इज ए टोकन। अभी इस टोकन का ओनर कौन है? ऑथ सर्वर है, ठीक है? ऑथ सर्वर के पास जाओगे, सही वैलिडेशन से जाओगे तो यू विल गेट सम न्यू थिंग, न्यू एक्सेस टोकन, बट यू विल नॉट नेवर गेट द यूजर डिटेल्स, यूजर नेम पासवर्ड तो आपको नहीं मिलेगा ना, ओके? नहीं दे रहे, दैट्स व्हाट नो, रिफ्रेश टोकन जो है वो दे रहे, यू हैवंट, ये देखो ठीक से देखो इसका, यूजर नेम पासवर्ड आर नॉट गिविंग, वी आर गिविंग द रिफ्रेश टोकन, and we are giving the scope and grant type, we are giving refresh token,
So if I call this, it will give me a new refresh token. Sorry, new. नहीं, फर्स्ट टाइम, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, फर्स्ट टाइम जब करोगे तब यूजर नेम पासवर्ड देना है. वन टाइम फर्स्ट टाइम के लिए यूजर इज देयर. बट व्हाट आई एम सेइंग, एग्जांपल सोचो, वो एग्जांपल में क्या बोला था कि कुछ टाइम बाद यूजर नहीं है तुम्हारे पास, बट तुमको रिसोर्स सर्वर को लॉग इन करना है. जस्ट लाइक दैट इनिशियल केस की यूजर नेम पासवर्ड तुमने क्लाइंट साइड में उसको लॉग इन करने दिया. उसके बाद एवरी टाइम यू, योर प्रॉब्लम इज यू कांट परसिस्ट दैट यूजर नेम पासवर्ड एंड योर एक्सेस टोकन हैज़ ए लिमिटेशन कि वो कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो जाएगा. तो आप क्या करो, आपके पास सॉल्यूशन क्या है? यू कांट एक्सेप्ट, मतलब आप यूज़र को बार बार नहीं बोल सकते हो कि आप यूज़र नेम पासवर्ड से लॉग इन करो, नहीं बोल सकते हो. आपके पास सॉल्यूशन क्या है बताओ. सो दिस इज द सॉल्यूशन. समझ रहे हो? द सॉल्यूशन इज व्हाट, whenever you are issuing access token उसके साथ मैं एक रिफ्रेश टोकन भी देता हूँ. सो नेक्स्ट टाइम अगर आप रिफ्रेश टोकन लेके आओगे मेरे पास, इफ all other information is correct along with the refresh token, I'll give you a new token to you which you can use right next. Okay, got it? Exactly. देखो ना, मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ तो what it is giving, it is giving me a new access token. Right, this is the bearer token, this is the refresh token. Again a new refresh token is being given. ठीक है. इसका काम नहीं है. रिसोर्स सर्वर को क्या चाहिए? रिसोर्स सर्वर डोंट वर्क इन द रिफ्रेश टोकन, राइट? हाँ, चेक टोकन वाला कॉल करके देखेगा ना रिसोर्स सर्वर. ठीक है. If I use this in the check token, let's see what is happening. Okay, authorization resource header में कुछ नहीं, authorization छोड़ो. अच्छा, हेडर में क्या जा रही है? ऑथेंटिकेशन. ठीक है. अच्छा, किसी की दिमाग में ये क्वेश्चन है कि मैं रिफ्रेश टोकन को एज ए चेक टोकन कॉल करूँ तो क्या होता है, राइट? लेट्स सी. I took a refresh token and I call a check token service. Let's see what is happening. क्या बोल रहे हैं? Invalid token was not recognized. That means refresh token से आप लॉगिन नहीं कर सकते हो. refresh token से आप रिसोर्स सर्वर चेक टोकन आपको ट्रू नहीं देगा. आपको ऑलवेज नीड एक्सेस टोकन. तो ऐसा मत सोचो कि रिफ्रेश टोकन मेरे पास आ गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ. नहीं, रिफ्रेश टोकन इज ए अनदर टाइप ऑफ टोकन to get a new access token which is being used by the auth server, but refresh token is not the access token. Okay, clear है? स्नेहल, रातुल, क्लियर? अभी नेक्स्ट ग्रैंड टाइप में जाए. डाइजेस्ट कर लो इसको, अच्छे से डाइजेस्ट कर लो, नहीं तो आई थिंक आएंगे. अभी ऑथराइजेशन कोड तो आएंगे, बट उससे पहले ये अच्छा ठीक है, ऑथराइजेशन कोड में आ जाते हैं बिकॉज एवरीवन इज वेटिंग फॉर दिस ऑथराइजेशन कोड, राइट? This is the most complicated and most useful grant type. Okay, let's see what we need to do. ठीक है, इसका फ्लो थोड़ा अच्छे से समझते हैं.
इसका फ्लो ऐसा है कि आप क्लाइंट को ध्यान से सुनना, ठीक है, आप क्लाइंट को यूजर नेम पासवर्ड, राइट, नहीं दे रहे हो, आप सीधा ऑथ सर्वर को देना चाहते हो। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आई मीन कि आप एज ए क्लाइंट, पोस्टमैन जो क्लाइंट है उसमें आप क्या देते हो, आप यूजर नेम पासवर्ड दे के पासवर्ड टोकन इशू करते हो, राइट? बट that is different. Here what we are trying to do, assume that example of that you are using application जहाँ पे आप पहली जब कुछ हिट करते हो, लॉगिन करते हो, इट विल रिडायरेक्ट टू ए गूगल पेज, और मतलब आप साइन इन विद गूगल में क्लिक करते हो तो आपको गूगल पेज में राउट कर देते हैं। ओके, that means you want to give the username password in the auth server directly, so Google is my auth server now. Okay, you want to use the auth server, you want to give the credential to auth server directly. Okay, not in the client. Client should not, you know, have any idea what is your username password. Okay, now you gave the, username password in auth server, then what it will do, auth server will, if it is correct, auth server will redirect your call to the client and it will give a code. Okay, fine. Till that point it's clear? No? Okay, it will give a code to the client, right? Next what it will do, client has to do, client has to call the token, that okay, give me the token. Okay, and I, here is my code, here is my all other details, right? I am a client, so client is a app one client, what is my credential, everything I'll give you, and I'll give you the code. And along with that, the auth server will give me a token. Okay, then that token I can use to get any of the, resource which is sitting behind the resource server. Okay, this is the authorization code grant type. ठीक है, तो इनिशियली तो आपको थोड़ा बहुत, बट जस्ट थिंक अबाउट द फ्लो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. You are not giving the username password to client, you want to give the username password directly to the auth server. Auth server should redirect your call to a client with a code, then using that code client will again call to get a access token. That access token will be used, right, as a token to get the resource. ठीक है, ओके, गुड, कूल. अब इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, थोड़ा और क्लियर आएगा. करूँ इम्प्लीमेंट कि एनी क्वेश्चन है? बिफोर दैट एनी क्वेश्चन? बोलो बोलो, टेल मी टेल मी. हाँ, एग्जैक्टली, डायरेक्ट ऑथ सर्वर पे जाएगा एंड ऑथ सर्वर विल गो बैक टू द क्लाइंट विथ ए कोड. ठीक है, और क्लाइंट को बोलेगा कि तुम ये कोड यूज करके फिर से मेरे को कॉल करो, सो आई विल गिव यू द ऑथेंटिकेशन टोकन. जरूरत के अंदर, एग्जैक्टली, सिंप एग्जैक्टली, सिंपल सिंपल एग्जांपल है. आप एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, मतलब आप एक सॉफ्टवेयर हो, अब आप एक जो भी, मतलब यू आर होस्टिंग वन थिंग,
बट यू डोंट हैव एनी यूजर बेस, आपके पास यूजर डिटेल्स कुछ नहीं है, आप यू आर अलाउइंग यूजर टू यूज ए गूगल. नाउ हु इज द ऑथ सर्वर हियर? गूगल हैज द ऑल द यूजर डिटेल्स. यस. तो आप कैसे, बट गूगल आप ऐसा तो नहीं कर सकते हो कि गूगल मतलब आपका एप्लीकेशन में कोई आए और गूगल का पासवर्ड दे दे, ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते, राइट. हम्म. हम्म. एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. ओके. गॉट इट. फर्स्ट टाइम टोकन देगा तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि there are few things, right, which is associated with. I'll give you one thing. So if you, when you will do the implement, there is another field is like state मतलब क्या होता है, मैं अगर एक ही बार आपको टोकन दे देता हूँ, that means I don't know, right, someone configure it correctly. So it's a two layer thing. मतलब आप अगर फर्स्ट टाइम टोकन दे देते हो, दिस फ्लो इज कॉल्ड इम्प्लिसिट ग्रांट टाइप. ये आप तभी कर सकते हो जब Google server is, you know, assume that in your organization you are hosting a separate auth server for your own organization. So that means client is very known to you, but here client is not known to you. Google की perspective से सोचोगे तो client is not known to you, right? Client and user are two separate entity. आप क्या कर रहे हो, आप इसीलिए टू लेयर बट बिठा के रखे हो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्लाइंट की स्टेट में था. और क्लाइंट अगर समझ लो कि मैंने क्या किया, मैंने सिंपल एक चीज़, जस्ट थिंक अबाउट इट. ओके. नाउ I will give you whenever you are calling it, right, I'll give you one state parameter. ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा. I'll explain it later. Okay. तब क्लैरिटी आएगा. अभी इसको इम्प्लीमेंट करते, देन आई थिंक इट विल बी क्लियर टू एवरीवन. ओके, ये चीज़ याद रखना, ठीक है. ओके. सो फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, लेट्स सी व्हाट वी नीड टू डू. ओके. अभी हमको क्या करना है, तो हम एक दूसरा क्लाइंट को ऑनबोर्ड करेंगे विथ ऑथराइजेशन कोड. ओके. ठीक है. बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है. जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द फ्लो हाउ इट इज़ वर्क. अभी इसको और एक क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हैं, एंड हम क्या करेंगे, विथ क्लाइंट F2. मैं F2 को देना चाहता हूँ with sec2 with authorization grant type is equal to authorization code dot scope. इसको भी वेब क्लाइंट रखते हैं. ओके. then what I need to do, web client F2 sec2 authorization grant type authorization code scope. ओके. आई नीड टू गिव द रीडायरेक्ट. कहाँ पे मैं रीडायरेक्ट करना है, redirect URI, right? Redirect URI, I'll use a simple HTTP. Okay. Hold on. Localhost 3005. Assume that I am going to implement in future. That is a that will be my क्या बोलते हैं, client. I'll implement something in the client, and as of now actually redirect URI, right, localhost 3005, right. Then what I'll write that home, ये मेरा URL रहेगा, ठीक है. and I'll use I'll use this access token validity second also. Sorry, यहाँ पे क्या करते हैं, access token validity second, इसको भी हम 300 कर देते हैं. ठीक है.
मतलब I have onboarded one client with this authorized grant type, authorization code and scope is your client. ठीक है, cool. Yes, no, सही है. ये दोनों लाइन जस्ट एड इट इन योर. Whenever you are done, just let me. So yeah, one more thing I just need to do, that is that हमको एक फॉर्म लॉगिन भी देना है, राइट? नहीं तो वो कैसे चलेगा? मतलब अगर मैं बताता हूँ क्यों क्यों दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लो एक बार. मैं यहाँ पे http डॉट आई नीड टू गिव ए फॉर्म लॉगिन. ये क्यों दे रहा हूँ मैं बताता हूँ. क्योंकि ऑथराइजेशन सर्वर के पास अगर सीधा रिडायरेक्ट होगा तो मेरे को कहीं पे तक उसको प्लेस देना है जहाँ पे वो यूजर नेम पासवर्ड देगा. सो दिस इज माई प्लेस, इट्स लाइक फॉर्म लॉगिन. आई थिंक इट शुड वर्क, बट मैं दे देता हूँ, राइट? फॉर्म लॉगिन तो मेंशन कर देता हूँ कि मेरा फॉर्म लॉगिन काम चल जाए. ठीक है. जब ये हो जाएगा बोलना, ठीक है?
डन, ठीक है, ग्रेट। अभी हमको नेक्स्ट टारगेट क्या है, इसको रन करके देखना है कि व्हाट आई टोल्ड यू दैट इज वर्क। वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू, हम लोग अभी सिर्फ ऑथ सर्वर पे फोकस कर रहे हैं, एंड वट एवर वी आर गोइंग टू डू ऑन द अदर साइड टू एक्सेस टू ऑथ सर्वर, और कैसे टोकन करना, आइदर इट विल बी फ्रॉम ब्राउजर वी विल hit the auth server, or we will use postman, right? But the plan is like eventually we will implement a client, auth client, also a resource server। जब हम पूरा इंटीग्रेट करेंगे तब पूरा चीज़ और क्लियर हो जाएगा। एज ऑफ नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, वट एवर वी आर डूइंग फ्रॉम द पोस्टमैन और फ्रॉम द ब्राउजर, दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी डन बाय द क्लाइंट इटसेल्फ, क्लाइंट एप्लीकेशन इटसेल्फ, ठीक है। डोंट एज्यूम कि अभी ये पोस्टमैन से होगा कि इससे होगा, राइट। अभी इसको रीरन करते हैं एप्लीकेशन को, एंड लेट्स सी हाउ दिस थिंग वर्क, ठीक है। अभी इसको हम कहाँ से ये करेंगे, तो अगर ऑथ सर्वर के पास पहुँचना है, राइट, सो हाउ वी कैन रीच आउट टू दैट ऑथ सर्वर। फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्टमैन से तो हम नहीं पहुँच सकते नहीं है, मतलब हम ऑथ सर्वर में यूज़र नेम पासवर्ड कैसे देंगे, तो उससे अच्छा मैं एक ब्राउज़र से दिखाता हूँ, सो दैट विल बी आई थिंक वेरी यूजफुल। ओके, मेरा ब्राउज़र दिख रहा है, राइट? ओके, लेट मी टेक a look what I'm trying to do। देखो, मेरे को क्या करना है, HTTP, okay, then what I need to do, I need to give the local host, ठीक है, and I need to give local host, मेरा यहाँ पे होस्ट हो रहा है 3004 में, okay, then what I have, I need to give auth। अभी एक एंड पॉइंट ठीक से देखो, ऑथराइज, दिस इज द ऑथराइज, राइट, दिस इज माई एंड पॉइंट, auth हाइफन ऑथराइज, राइट। यहाँ पे हमको क्या पास करना है, सॉरी यहाँ पे हमको क्या पास करना है, हमको अभी बेसिकली तीन चीज़ पास करना है यहाँ पे, राइट। आई विल आस्क इट कि मेरा रेस्पॉन्स टाइप शुड बी कोड one thing, and in the query param, and my client id is app2, and my scope is web client। यहाँ पे ढंग से देखना, समरेज जस्ट नोट दिस पॉइंट, हम क्लाइंट पासवर्ड नहीं दे रहे, क्लाइंट सीक्रेट नहीं दे रहे, ठीक है। हम पहले बोल रहे ऑथ सर्वर को जब हिट कर रहे तब हम सिर्फ क्लाइंट आईडी आप दो, मेरे को पासवर्ड मत दो। आप पासवर्ड कब देखना, जब आप ऑथराइज टोकन यूज करोगे, when I'll give the token, that time I'll give you one, that time give me the password, but अभी मत देना। अभी सिर्फ आप क्लाइंट आईडी दो, आपका स्कोप बताओ, और आपको रेस्पॉन्स टाइप में कोड चाहिए बताओ, ओके। if I go, just take a look what it's happening, okay। if I click this, what is happening, it is rerouting to my login page, देखा, 3004 से लॉगिन हो गया। मैं यह कॉपी कर देता हूँ, सो एवरी वन इज गेटिंग दिस। फिर से करता हूँ मैं, HTTP लोकल होस्ट 3004, राइट। अरे चलो कॉपी कैसे करूँ मैं, HTTP लोकल होस्ट 3004, then auth, then okay, here is your end। देखो ये पहले इधर तक पहुंचता है, राइट। ये हिट करने के बाद आपको लॉगिन स्क्रीन आ रहा है, ये सुन लो, बताओ। जस्ट टाइप दिस,
आया लॉगिन स्क्रीन? I need to give Ratul 1, 2, 3, 4, 5. Snehal and Samres, are you able to see this? स्नेहल, एरर वाले वेब पेज पे जा रहा है। तुम ठीक से देखो, जो मैंने दिया है वही दिया। क्या बोल रहे हैं एरर वाले वेब पेज में, क्या बोल रहे हैं? कैन यू शेयर योर स्क्रीन? स्क्रीन शेयर कर सकते हो? यस। ऑथराइजेशन कोड, ऐप टू, सीक्रेट टू। नहीं नहीं नहीं, उससे प्रॉब्लम नहीं, वो उधर तो वो भेजेगा। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज ऑथराइज ग्रैंड टाइप। ऑथराइजेशन कोड का स्पेलिंग देख लो एक बार। सही है। पहले चल रहा था राइट, पासवर्ड से चल रहा था राइट। अभी मेरे को ये दिखाओ। नहीं, शो मी दैट। ये कौन सा पोर्ट में चल रही है? 8TP चल रहा है, मतलब सर्वर डॉट पोर्ट में तुमने चेंज नहीं किया, इसको रीरन किया राइट? ओके ठीक है, अभी अभी ब्राउज़र में जाओ। क्या दिया? लोकल होस्ट। एक बार टाइप करो HTTP, मैन्युअली टाइप करो। ऑथ, ऑथराइज, पैरामीटर में रिस्पॉन्स टाइप। पहले लिखो रिस्पॉन्स टाइप अंडरस्कोर टाइप इज इक्वल टू कोड एंड एम्परसेंट, हाँ, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू F2, ग्रैंड टाइप दो फिर, एंड एम्परसेंट ग्रैंड टाइप। नहीं, ग्रैंड टाइप नहीं, सॉरी सॉरी, ग्रैंड टाइप नहीं, स्कोप, स्कोप, स्कोप इज इक्वल टू वेब क्लाइंट दिया। ठीक है, हिट करो। नहीं आ रहा है? हाँ हाँ, HTTP करो। नहीं आ रहा, ओके। फॉर्म लॉगिन वाला ऐड किया था जो मैं कॉन्फ़िगर में दिया था, देखो। ओके, ये फिर से रन करो। ओके देखो, है। ठीक है, चलो, you can stop sharing. Okay. Okay, so just take a look what is happening. Okay. रातुल इज इन BRB। ठीक है, एक ब्रेक लेके 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं।
हम शायद ब्रेक नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. We should take some break. क्या हो गया? अच्छा, रातुल इज इन. ओके, चलो रातुल आ गए. सॉरी. सो यहाँ पे मैंने रातुल एंड 1 2 3 4 5 दिया. राइट, लेट मी सी व्हाट इज हैपनिंग. जस्ट टेक अ लुक व्हाट इट इज रिटर्निंग. ओके, व्हाट इट इज सेइंग. अब गूगल में गया, आपने बोला, आपको क्या दिखता है कि ये एप्लीकेशन आपको ऑथराइज यूज़ करना चाहते हैं. देखो सिमिलर टाइप ऑफ एक स्क्रीन आया ना, बेसिक है बट इसमें देखो सेम चीज़ है. ओथ अप्रूवल ये बोल रहे हैं, डू यू ऑथराइज ऐप टू एक्सेस योर प्रोटेक्टेड रिसोर्स. स्कोप इज वेब क्लाइंट, यू वांट टू अप्रूव और डिनाई. if you approve it, then I will give the code to whom, that person who is trying to access, who is the here client. App2 is my client, right? Yes. I need to approve it and I need to authorize. If I do authorize, let's see what is happening. It is redirecting to that localhost 3005 home and it is giving one code. ठीक है, यही वो कोड है जो ऐप को चाहिए. राइट, यस और नो. अभी इसको कोड मिला है, यहाँ पे देखो रिडायरेक्ट हुआ. राइट, 3004 में मेरा ऑथ सर्वर चल रहा था, अभी 3005 में चला गया. अगर मेरा कुछ क्लाइंट लॉगिन, मतलब मैं अगर सही में क्लाइंट इम्प्लीमेंट कर दूँ ऐप 2 का, राइट, देन यू विल नॉट रियलाइज एनीथिंग. आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन. बट अभी हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट कैसे करेंगे. नेक्स्ट पार्ट इज अ पोस्ट मेथड टू गेट द ऑथराइजेशन टोकन. सो वी विल यूज दिस कोड, राइट, एंड वी विल डू द पोस्टमैन रिक्वेस्ट. ठीक है, अभी देखते हैं कि हमको ये तो मिला है बट ऑथराइजेशन टोकन कैसे मिल सकता है. ओके, एक्सेस टोकन कैसे मिल सकता है. ओके, कूल. ओके, अभी हमने कहाँ पे है, लोकल होस्ट ऑथ टोकन में है. अभी वापस आ गया. राइट, हमने यहाँ पे क्या देना है, अभी हमको देना है पासवर्ड app2 sec2. राइट, ओके, लेट्स फॉरगेट. बॉडी में देखो क्या क्या दे रहा हूँ मैं. मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास आई एम ए क्लाइंट, आई डोंट हैव एनी थिंग. मेरे पास कोई क्लाइंट का इंफॉर्मेशन नहीं है. राइट, आई डोंट हैव एनी थिंग, आई जस्ट हैव ए कोड. मैं कोड देके खुद को ऑथेंटिकेट करके मैं ऑथराइजेशन टोकन मिल सकता है मेरे को. यस और नो. यस. तो मेरे को क्या क्या देना पड़ेगा, ग्रैंड टाइप में लिखना पड़ेगा ऑथोराइजेशन code, right, and I need to give code. Okay, I need to give code. What is my code? This is my code, right? There will be no secret refresh token. Scope will be there, right? And I need to give the redirect URI. Okay, redirect URI भी देना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा ऑथ सर्वर है इधर भी चेक करके देखता है कि तुमने जो रीडायरेक्ट में किया था उसी से तुम आए हो कि वो दूसरा कुछ था जो आप मेरा सिस्टम में रजिस्टर करके गया. राइट, लोकल होस्ट 3005/home. ठीक है, देख लो. ओके, ये सुनो, बोलो, रन करूं, टोकन देगा ये.
Let's see if it is giving the token or not. Yes, it is giving me the token. अभी एज ए रिसोर्स सर्वर आई कैन यूज दिस टोकन टू टेक ए लुक कि ये चेक टोकन का सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है. वी कैन टेक ए लुक राइट. क्या है ऑथराइजेशन में मैं एज ए रिसोर्स सर्वर मेरा रिसोर्स है. हेडर्स में कुछ नहीं है. बॉडी में मैंने टोकन दिया. लेट्स सी व्हाट इट इज गिविंग मी बैक. इट इज गिविंग मी ऑल द थिंग्स राइट. ये ट्रू है. ये यूजर नेम रातुल है. इसका ऑथोरिटीज रीड है. ये क्लाइंट आईडी F2 के लिए इशू हुआ है. दिस इज द स्कोप वेब क्लाइंट. ओके 2 minutes right. Let's digest it first. Okay, what you did, हमने एक दूसरा ऑथराइजेशन कोड वाला ऐड किया. उसमें लिए उसके लिए क्या किया हमने ब्राउज़र से पहले. सो व्हाट द क्लाइंट शुड डू, क्लाइंट शुड फर्स्ट whatever it is supposed to do, whenever user want to log in via Google, client has to redirect their Google API. okay, yes or no. और गूगल में पहले ही ऑथ सर्वर में वो क्लाइंट आप खुद को रजिस्टर करके रखेगा कि दिस इज़ माई ऐप आईडी, दिस इज़ माई पासवर्ड सीक्रेट. ठीक है. एंड दिस इज माई रीडायरेक्ट. जब मैं यहाँ से आऊँगा इसीलिए राइट. whenever we are trying to get the token or the code whatever we are using these are the parameter we are using. नॉट ओनली दैट हम ऑथराइज को सीधा रिडायरेक्ट कर रहे हैं बट हम क्लाइंट आईडी भी दे रहे हैं राइट. दिस इज माई ऐप टू एंड दिस इज माई स्कोप वेब क्लाइंट. ओके. व्हेन आई एम गिविंग दैट ऑथ सर्वर इज रिडायरेक्ट मी टू द लॉगिन पेज. लॉगिन में मैंने यूज़र नेम पासवर्ड दिया. उसके बाद एक पेज है जहाँ पे मैंने अप्रूव किया. उसके बाद क्या होता है ऐप टू का जो रजिस्टर्ड रीडायरेक्ट यूआरएल है उसमें वो ट्रैफिक को राउट करते हैं विद ए कोड राइट. नाउ इट हैज़ द कोड राइट. इट कैन यूज द कोड टू गेट ए एक्सेस टोकन. उस कोड को यूज़ किया हमने. और एक्सेस टोकन कैसे मिला हमको, हमने एक पोस्ट मेथड से कॉल किया राइट. एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑल द अदर थिंग्स यूज़र नेम पासवर्ड, हमारे पास तो यूज़र नेम पासवर्ड होगा नहीं इसीलिए हमने सिर्फ रिडायरेक्ट यूआरएल एंड कोड दिया राइट. ग्रैंड टाइप को चेंज किया ऑथराइजेशन कोड. ओके. एंड ऑथराइजेशन में मेरा क्लाइंट का जो यूज़र नेम पासवर्ड दिया एंड आई एम गेटिंग द एक्सेस टोकन. बताओ क्लियर कट है ना. ये कुछ एकदम गाँव जैसा स्लो है. मतलब एकदम तो ना गाँव आदमी बोलते हैं ना सिंपल थिंग राइट. नथिंग नथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड हियर. स्नेहल समझ में आया. समरेश इसके यूज समझ में आया क्यों इसको यूज करना है. एग्जैक्टली exactly. आप ऑथ सर्वर मेंटेन नहीं करना चाहते हो. आप चाहते हो कि कोई एक दूसरा कोई आके उसका यूज़र आप यूज़ करो. आप अगर ऑथ सर्वर इतना लॉगिन इतना कौन कौन इतना झंझट लेगा. उससे अच्छा है कि आप दूसरे को दे दो कि आप भाई गूगल आपका अकाउंट है ठीक है मैं उसी का मान लूँगा राइट. दैट्स हाउ वी व्हाट वी डू. इफ़ आई सिंपल मैं आपको दिखाता हूँ एक सिंपल चीज़ दिखाता हूँ राइट. सपोज हाँ ऑथ सर्वर में होगा ना रिडायरेक्शन एवरीथिंग. तो वहाँ से वो मैं यहाँ पे अगर गिटहब को एक्सेस करूँ राइट. आई एम इन इनकॉग्निटो मोड राइट. So what it will show, it will give me the sign in right.
अभी साइन इन में मेरे को यूज़र नेम पासवर्ड दे रहे हैं, ये गलत है राइट। दूसरा कोई एप्लीकेशन बताओ जहाँ पे वो नहीं देता है, देन यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट। आई थिंक यू हैव यूज्ड मल्टीपल एप्लीकेशन लाइक दिस राइट। आप गूगल से लॉगिन कर रहे हो तो यही सेम फ्लो होता है कि नहीं बताओ, राइट? दिस इज द सेम। नहीं, वो इन मेमोरी में स्टोर रहता है और सर्वर सेव करके रखता है इन मेमोरी में। ठीक, एग्जैक्टली एवरीथिंग विल बी देयर। ठीक है, गुड टू गो नाउ नेक्स्ट। वे एक और चीज़ करेंगे, इम्प्लिसिट विल डू लेटर। इम्प्लिसिट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। ये तीन अगर समझ गया, ये दो समझ गया तो दैट इज फाइन। आई विल जस्ट ऐड वन मोर थिंग इन द ऑथ सर्वर, देन वी विल इम्प्लीमेंट द रिसोर्स सर्वर। ओके, एंड देन बोलो बोलो। गुड क्वेश्चन, मतलब एकदम दिल का क्वेश्चन कर दिया कि हम कैसे करेंगे। हम एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, उसके साथ करना चाहेंगे, राइट? दैट इज योर क्वेश्चन, राइट? आई विल शो यू, आई विल शो यू। सो बेसिकली आई विल शो, दिस इज माय गिटहब, दिख रहा है राइट? मैंने गिटहब के साथ किया था, एंड गिटहब के साथ हम करेंगे भी, राइट? गूगल का तो वो बहुत ही पेड सर्विस नहीं, उसका है मतलब यू कैन डू एनीथिंग, बट गिटहब से मैंने किया था। एंड इफ आई इन द गिटहब राइट, आई कैन, कि देखो मेरा ओथ ऐप है, राइट? यहाँ पे आप एक ऐप को ऑनबोर्ड कर सकते हो, जैसे आप रजिस्टर कर रहे हो ना, मैं यहाँ पे आप कर सकते हो ऐप। ओके, सो यहाँ पे आपको सब कुछ देना पड़ता है कि ये हमारा एप्लीकेशन नेम है टीसीपी ऐप, ये मेरा होम पेज है, ठीक है? और ये मेरा ऑथराइजेशन कॉल बैक यूआरएल, दिस में रीडायरेक्ट यूआरएल स्लैश होम, ठीक है? एंड दिस इज माय क्लाइंट आईडी, राइट? सो आई विल शो यू हाउ इट विल वर्क। सो बेसिकली समझ लो कि मैंने ओके, लेट्स डू वन मोर, एक एक एक्स्ट्रा करके देखते हैं सबके अगर इंटरेस्ट है, बट बाद में भी हम ये पूरा हम एंड टू एंड करेंगे। अभी हम सिर्फ ये करके दिखाते हैं तुमको कैसे करें। समझ लो कि मेरा गिटहब का यूज़र है। समझ लो तुम एक गिटहब यूज़र हो, मैं हूँ, समरेश स्नेहल है, रातुल है, राइट? एंड यू वांट टू यूज़ द गिटहब रिपो, गिटहब में जितने यूज़र है उसको यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है? तो हम गिटहब का ओथ एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, राइट? मेरे पास ओथ सर्वर है ही नहीं, गिटहब का ओथ सर्वर है। ओके, नाउ what I'll do, I'll give a application name that is my TCP नहीं, समझ लो कि फोटोन ऐप, ठीक है? मेरा होम पेज यूआरएल है http:// लोकल होस्ट 8087। ओके, एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन टेस्ट एप्लीकेशन। कॉलबैक यूआरआई में मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इसको यूज़ करूँ, इसका मेरा होम में रिटर्न आए। ओके, रजिस्टर एप्लीकेशन, मैं जब रजिस्टर करूँगा एप्लीकेशन को, ये मेरे को क्या देगा? एक क्लाइंट आईडी देगा, ओके, एंड क्लाइंट सीक्रेट देगा। ओके, एक क्लाइंट आईडी दिया, मतलब जो क्लाइंट आईडी ऐसा नहीं कि मैं कुछ, ये मेरे को देगा एक यूनिक क्लाइंट आईडी, आई नीड टू कीप इट्स, ठीक है? अभी मैं इसको नोट करके रख देता हूँ क्लाइंट आईडी, ठीक है? सॉरी,
क्लाइंट आईडी मैंने नोट करके रख दिया, और उसके बाद हम जो कर सकते हैं वो है क्लाइंट सीक्रेट, राइट। मैं क्लाइंट सीक्रेट क्या होता है कि आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। ओके, दिस इज द क्लाइंट सीक्रेट, एंड ये बोलता है क्लाइंट सीक्रेट बार बार नहीं दिखेगा, ये आपको कॉपी करके रख दो, ठीक है। यही कोड है, ये क्लाइंट आईडी है, क्लाइंट सीक्रेट है, ठीक है, हो गया। Done, right? Now what I need to do, this is my client ID, right? And this is my whatever the things. Now what I need to do, I need to uh, I need to बट मेरे को तो ये पता होना चाहिए कि गिटहब का लिंक किधर है, किधर मैं ये करूँ, राइट? मतलब कौन सा यूआरएल को हिट करूँ। ओके, पूरा दे दिया, देखो क्या क्या लिखा है। When GitHub specific login parameter, it prompts user specific account, they can sign in the authorization app, ठीक है। ये एक्सेस टोकन दो, ये सब चीज़ दो, इट विल डू एवरीथिंग। ओके, लेट्स सी, राइट, धीरे धीरे करते हैं। पहले क्या बोला कि मेरे को सिर्फ क्लाइंट आईडी चाहिए, रिडायरेक्ट यूआरएल लॉगिन ये सब इट इज़ द रिक्वायर्ड पैरामीटर ओनली, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इनकॉग्निटो मोड में जाता हूँ, राइट, एंड व्हाट इज़ माई क्लाइंट आईडी, व्हाट इज़ दैट, हमने स्कोप कहीं पे डिफाइन नहीं किया, राइट, एंड आई विल टाइप ए रिस्पॉन्स, ठीक है। देखो किधर आया, where I am, चला गया। मैं अपना यूज़र नेम पासवर्ड देता हूँ, यू कैन ऑल्सो गिव योर ओन, नहीं आपको फिर रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं ये एग्जांपल देता हूँ, फोटोनैप आपकी गिटहब पे रजिस्टर नहीं है, सो इफ़ आई यू कैन मतलब आई कैन गिव एनी वन यूज़र नेम पासवर्ड, इफ़ आई डू द साइन इन इट विल आस्क मी कि चलो क्या बोलो, इनकरेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड, सॉरी यूज़र नेम पासवर्ड गलत दे दिया। व्हाट इज सेइंग कि मैं want to authorize, right, authorizing will redirect to localhost 8087, दे दिया कोड, ठीक है। अभी क्या करना है पोस्टमैन, क्या करना है, बॉडी में जाऊँ, ग्रैंड टाइप ऑथराइजेशन कोड, कोड यूज़ करूँ, बट ऑथराइजेशन में मेरे को जो उसने क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट दे दी यूज़ करना है, राइट। client id, this is my client secret, ओके। बॉडी में हमने क्या किया, स्कोप में कुछ दिया नहीं, अच्छा उसको क्या क्या चाहिए थोड़ा देख लेते हैं, उसको क्या क्या मैंडेटरी फील्ड है, ठीक है। इसका तो अब जरूरी नहीं है, कोड तो कोड मिल गया, राइट, हाँ कोड कॉपी कर लिया, ठीक है। अभी इसको क्या चाहिए था, क्लाइंट आईडी चाहिए, क्लाइंट सीक्रेट चाहिए, कोड चाहिए, रीडायरेक्ट यूआरएल इज नॉट मैंडेटरी, राइट, हाँ ठीक है। यहाँ पे टोकन की जगह एक्सेस टोकन उसने यूआरएल बनाया, नॉट द टोकन, ओके। सो आई नीड टू चेक द यूआरएल टू https github access token,
और रिडायरेक्ट URI में मैंने क्या दिया था, लोकल होस्ट भी दे ही देते हैं 8087 होम, कुछ प्रॉब्लम ना आए। स्कोप कुछ देना नहीं है, कोड ग्रैंड टाइप ऑथराइजेशन कोड, ओके भेजू अभी। इट शुड गिव मी द टोकन, दे दिया। ये क्यों दिया, ऐसा क्यों दिया, पर दिया इसने दिया, बट ये ऐसा क्यों दिया, इसका कारण है कि हमने कंटेंट टाइप एक्सेप्ट किया, हम कुछ बोला नहीं। तो हेडर में जाता हूँ, फिर मैंने क्या करता हूँ कि बताता हूँ कि यार मेरे को ना ये वाला चाहिए, कोई भी एक्सेप्ट नहीं होगा, आई विल ओनली यूज, सॉरी नहीं करने के रहे तो एक्सेप्ट एप्लीकेशन डॉट जेसन, ठीक है। अभी मैं ये कोड यूज़ नहीं कर सकता, कोड का ऐसा है कि एक बार अगर कोड यूज़ कर लिए तो नेक्स्ट टाइम अब नहीं कर सकते। इफ़ आई टेल इट, इट विल गिव मी द बैड वेरिफिकेशन कोड, कोड पास्ट इज इनकरेक्ट और एक्सपायर्ड, ठीक है। तो मेरे को फिर से एक बार देखना पड़ेगा। सो लेट्स डू द थिंग्स, न्यू इनकॉग्निटो विंडो, अभी गिटहब वाला था, ऑथराइज, राइट, then client id is equal to what, okay, and response code, sorry, response type is equal to code, सही है। it is giving me the github, I'll do the login here, 0, okay, it is giving me कि you are being redirect to this, as I already gave the authentication, नहीं अभी पूछा नहीं, फर्स्ट टाइम करोगे तो पूछेगा, राइट। ये मेरे को कोड मिला है, आई विल यूज दैट कोड एंड आई विल यूज हियर, बॉडी में मैं कोड को यूज करूँ, यस मिला, दिस इज माई एक्सेस टोकन, ठीक है। क्या बोलते हो, सही है। ये क्या बोल रहा है, यूज द एक्सेस टोकन टू एक्सेस एपीआई, अभी एक्सेस टोकन अलाउ टू मेक रिक्वेस्ट टू एपीआई ऑन बिहाफ ऑफ यूजर, ठीक है। सो इट्स लाइक, ठीक है, अभी आप ये टोकन को यूज़ करोगे तो डिवाइस फ्लो सोचो, क्लाइंट आईडी स्कोप, नहीं ये सब इतना कम्प्लीट, इसका बहुत इम्प्लीमेंटेशन है, बट हमने एक सिंपल इम्प्लीमेंटेशन किया, ओके। आई जस्ट स्टॉप इट हियर क्योंकि इट्स टू मच नाउ, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ है जो शायद थोड़ा अजीब लगा। आई जस्ट समराइज एंड आई विल जस्ट क्लोज फॉर टुडे, यू जस्ट डू द स्टडी एंड यू नो डू कोड को थोड़ा रिव्यू कर लो, देन वी विल कम बैक एंड इफ एनी कंफ्यूजन, आई नो दिस इज नॉट यू नो वेरी व्हाट शुड आई से, वेरी इजी नहीं है, बट अगर लॉजिकली सोचोगे तो बहुत ईजी है। व्हाट वी डिड टुडे, हमने एक ऑथराइजेशन सर्वर को इम्प्लीमेंट किया, यस। ऑथराइजेशन सर्वर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ा, हमने ऑथराइजेशन कोड वाला आई एम एक्सप्लेनिंग, सो इट इज़ लाइक दैट आई नीड टू फर्स्ट set up that app to secret to authorization grant type authorization code scope, what is the redirect URI and what is the access validity token, right। ये करने के and I need to enable the form login, after that
what I need to do, I need to go to authorize page with give the client ID and scope. So it is redirecting to the authorization server login page जहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा. लॉगिन के बाद it will redirect to the client. What is the redirect URL I gave with the code. उसके बाद वो कोड यूज़ करके I can take the access token, and that access token I can use right later, and that access token can be used as right check token or whatever the things. अभी मेरा authorization server में जो access token आया उसको check token करने के लिए मैं मेरा authorization server में मैं hit कर सकता हूँ. What additionally we did, GitHub में मैंने एक सिंपल ये जो क्लाइंट रजिस्ट्रेशन किया ये auth सर्वर की जगह समझ ले GitHub का सर्वर है, एंड GitHub सर्वर में मैंने सारे जो भी क्लाइंट है रजिस्ट्रेशन किया एंड वी यूज द सेम फ्लो. ओके, यस. कुछ कंफ्यूजन है? You can play with GitHub thing. You all have the account in GitHub, right? So you can just play with GitHub, not an issue. But we will use the GitHub later also, right? With a all flow. अभी तक हमने ये चीज़ मैंने बोला कि अभी हमने client implement नहीं किया, resource server implement नहीं किया. Okay, these two things we will implement soon. Then we will have a complete picture कि पूरा end to end कैसे चलता है. Okay, and if you notice whatever we use the auth server, GitHub is also implementing the same thing. ऐसा नहीं कि GitHub में हमको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ा क्या? Same thing, right? Magically, this is called auth 2.0. Okay, everyone is using same protocol. कहीं पे भी आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक था कि auth 2.0 अगर कोई यूज़ नहीं कर रहा है उसके लिए ये सिक्योरिटी इज ए मतलब नो वन अंडरस्टैंड हाउ आई एम गोइंग टू यूज द सिक्योरिटी, हाउ आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट द सिक्योरिटी. अपना अपना तरीका था, अपना अपना टैलेंट था डेवलपर को अपने हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन करते थे. OAuth 2.0 आने के बाद ये चीज़ हुआ कि ओके देयर इज अ वे, राइट, यू कुछ भी कहीं पे भी इम्प्लीमेंट करो बट आपको इसी यही जो चीज़ें दिस प्रोटोकॉल यूज़ करना है, राइट. So there will be 4 entities: resource server, client, right, and your auth server, and what are the other things? User, right. So these are the things, 4 things आपको entity करना है. फिर client एक अलग attribute होगा, application एक अलग attribute होगा. आपका all the scenario they just thought about it कि आपको सिर्फ access token से काम नहीं चलेगा. You need a refresh token also. So they implemented refresh token. This is a separate grant type. Password is a one grant type. Then they realize कि नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा क्योंकि कोई अगर थर्ड पार्टी का ऑथराइजेशन सर्वर यूज कर सकते हैं तो कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं. उसके लिए ग्रांट टाइप है क्या? ऑथराइजेशन कोड, राइट. नाउ नेक्स्ट टू और 2 ग्रांट टाइप है. एक है इम्प्लिसिट ग्रांट टाइप दैट यू नो दैट ऑथराइजेशन कोड का सिमिलर है. वहाँ पे सिर्फ ये होता है कि कोड की जगह सीधा ऑथराइजेशन टोकन आ जाता है क्योंकि यू नो दैट एप्लीकेशन इट आपका इन हाउस है. और दूसरा है कि क्लाइंट क्रेडेंशियल, जहाँ पे कोई यूज़र नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन समझ लो कोई बैच एप्लीकेशन चल रहा है, दैट विल बी योर क्लाइंट क्रेडेंशियल. विल इम्प्लीमेंट दोज टू लेटर, बट दिस आर द 4 ग्रांट टाइप. ओके, अगर आपको कल या परसों या कहीं भी आपको अगर किसी ने बोला कि मेरा इधर OAuth to implement it with password grant type, you will understand, right, what is there. Yes or no? अगर बोला कि मेरा ऑथराइजेशन कोड यूज़ करते, यू विल अंडरस्टैंड, राइट. सो देयर इज सेंट्रलाइज ऑथ सर्वर. आप सीधा जब भी कोई एप्लीकेशन में जाते हो आप सीधा उसको रिडायरेक्ट कर देते हो. नाउ दिस इज द थिंग यू कैन इमेजिन कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ सिंगल साइन ऑन सर्वर बना सकते हो. यस और नो? आपको कहीं नहीं, कहीं पे भी कोई भी एप्लीकेशन जाएगा बोल दो कि एप्लीकेशन को आप सीधा रिडायरेक्ट कर दो दूसरा ऐप जो आपका ऑथ सर्वर वाला है, आप सीधा उधर रिडायरेक्ट कर दो, ठीक है. वहाँ पे लॉगिन करेगा फिर आपका एप्लीकेशन में फिर रिडायरेक्ट हो जाएगा, राइट, विथ ए टोकन. आप कोड मिला, कोड से आप टोकन इशू करोगे, फिर उस टोकन से कॉल करोगे तो एवरीथिंग इज फाइन. ओके, okay, please bear me for 2 more days, right, and after that I will make you something useful thing because I know that this is happening. and अभी देखो सीधा मैं इधर एक्सप्लेन कर सकता था
ये मैं सीधा एक्सप्लेन कर सकता हूँ बिकॉज दैट इज गोइंग टू यूज दिस ऑथ टू. बट अगर हम सीधा ये एक्सप्लेन कर देते थे, टेल मी द वन ट्रूथ थिंग, विल यू एबल टू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप. इसीलिए हमने बेसिक से स्टार्ट किया सो दैट योर फाउंडेशन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग कि कहाँ से आए हैं हम. ऐसा नहीं कि हम सीधा जाके अगर ये कर देते तो किसी को समझ में नहीं आता ये क्या लिखा आपने वेब सिक्योरिटी, व्हाट इज दिस पासवर्ड एनकोडर, व्हाट इज दिस ऑथेंटिकेशन मैनेजर, व्हाट इज दिस, राइट, व्हाट यू वी आर डूइंग इन द यूजर डिटेल सर्विस, व्हाट डज इट मीन. ये कोड तो ज़्यादा नहीं है, 2 कॉन्फ़िग क्लास है, ठीक है, और एक तुम्हारा ये है, तो इसमें इतना कुछ हो रहा है, राइट. But if we just directly implement this thing, then I think you will not understand most of the part. ये सिर्फ वो दूसरा चीज़ होता है कि आप कोई भी जाके यूट्यूब में देख लेते हैं कि ऑथ सर्वर का कैसे होता है, चलो कोड देख के कोड कर लिया, होगी इम्प्लीमेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनली हाउ इट इज़ वर्किंग, राइट. बट आई थिंक नाउ यू आर इन ए स्टेज यू अंडरस्टैंड कि ओके स्प्रिंग सिक्योरिटी कैसे काम करता है एंड उसके ऊपर ऑथ सर्वर कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, करेक्ट. Okay, 2 more days, I think within 2 days we will just try to close, right, have a closer. Okay, so yeah, that's the thing. I think chalo, let's close for today. But I always encourage you to just take a look क्या चल रहा है ये यहाँ पे and just play with it. Any question you can ask me anything, right. ग्रेजुअली हम शायद इसमें 2 चीज़ करेंगे विच विल टेक ओनली few more minutes tomorrow. Then we will gradually go to the resource server and finally we will do something a complete application for a complete application we will implement something with client also. So अब client से कैसा करेंगे कि client में आप जाते हो, client में आप कुछ भी करते हो तो it will directly redirect to the auth server का पेज. ऑथ सर्वर का पेज से वो डायरेक्ट रीडायरेक्ट होगा, फिर आप लॉगिन करने के बाद या तो गिटहब होगा या अपना ऑथ सर्वर होगा, वो आपको रीडायरेक्ट करेगा क्लाइंट का पेज से. फिर क्लाइंट का पेज में जब एक्सेस होगा वहाँ पे वो इंटरनली इट विल यू नो take the code and it will do a rest call to your auth server to take the token, right. फिर वो टोकन यूज़ करके रिसोर्स सर्वर को यूज़ करेगा. नाउ रिसोर्स सर्वर विल अगेन कॉल दैट चेक टोकन, राइट. चेक टोकन को कॉल करेगा, राइट, एंड इट विल सी दैट एवरीथिंग इज फाइन, देन इट विल गिव यू द रिसोर्स, राइट. ये करने के बाद वी विल जस्ट डू लास्ट थिंग, राइट, दैट इज द JWT. ये जो यहाँ पे जो भी टोकन है यहाँ पे देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये भी तो JWT यूज़ नहीं कर रहे, गिटहब भी JWT यूज़ नहीं कर रहे और हम भी नहीं कर रहे थे. ये जस्ट एक रैंडम स्ट्रिंग है, राइट. इट इज़ नॉट टू मच सिक्योर्ड. यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इन्फॉर्मेशन. Just we'll replace this token with JWT. I think that is end. Okay, now we were open to do anything, whatever you are thinking. आप कहीं पे जाओ, कहीं पे भी कुछ भी implement कर सकते हो. Okay, good to close. Any question? कुछ क्वेश्चन है, कोई चाहते तो अपना फेसबुक से भी कर सकते हो, फेसबुक में भी ऑथ टोकन देते हैं. आई डोंट नो इफ इंस्टाग्राम देते हैं कि नहीं, बट फेसबुक देते हैं, फिर गूगल तो देते ही है. बट गूगल का थोड़ा इंट्रीगेट करना थोड़ा और मतलब बहुत कुछ चाहिए. गिटहब बहुत ही ईजी लगा, इसीलिए मैंने गिटहब के साथ किया है टू मेक इट वेरी यूजफुल. बट कर सकते हैं, मतलब किसी के भी साथ कर सकते हैं. उसका डॉक्यूमेंटेशन है कि क्या क्या आपको फॉलो करना है, सिमिलर तरीके से होगा, ऐसा नहीं कि दूसरा कुछ होगा. Okay, can we close now?